आज ही This काम कर meeting दिया is being recorded. My voice is clear? Let me know, please. So, right plan and right activities, right? Yeah, they are very much important. So, today we will also learn about seven steps of goal manifestation. Hmm? And there are some hurdles, some mistakes which we are doing knowingly, unknowingly. First, become aware, and we will also try to resolve it. तो सभी लोग चैट बॉक्स में हाँ if you have some query please raise your hand so we will come to know who is speaking. Hmm? So लाइफ में गोल सेट होना चाहिए विदाउट गोल वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम. यस सुजाता जी 100% right. Goal is to what is surrender to Krishna. Yeah, that is our ultimate goal. Yeah, of course. हाँ, तो आगे बढ़ते हैं. So you have we had very good discussion about goals and how to achieve them, what is stopping us. So why we are starting this program from Hare Krishna TV? Many times people think we should just focus on our the chanting and do our bhakti process like reading, hearing, and that's it. Yeah, that is very good and it is very much required. That is like our constitutional position to serve Krishna, and we all are striving to serve Krishna, trying to serve Krishna. हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं उस कोशिश में हम कई बार फेल भी होते हैं राइट. जैसे आप सुबह उठना चाहते हैं यू वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मे बी यू वांट टू डू जपा और सम स्टूडेंट्स दे वांट टू स्टडी और यू वांट टू डू सम नो exercise yoga for your physical health but you are not able to do it. So what is the cause behind it? What is stopping us? तो कई बार हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन नहीं हो पाता. In spite of chanting, sometimes in spite of no following everything, we are not able to achieve it. So NLP, neuro linguistic programming, helps us to find out those loopholes. So where we are lacking and how to na, fill those no loopholes so that our our train or our vehicle can smoothly go towards or run towards Krishna, na, or devotional service. So that is our main motive. And apart from that, if you are not from devotional background, that is even then also this course will help you a lot. Hmm? In case of you want to achieve good health, now many people nowadays we are struggling to just feel energetic in the morning. हम सुबह उठते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत थकान है अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा. Yeah, it do happens with us. And please type yes in chat box if you get up in the morning and you feel no lack of energy, drained. This energy is drained completely and no motivation to get up. Or if it is there, it is very low. करना है बस because सर पे काम है तो करना है. But without any excitement, without any enthusiasm. Type yes in chat box if you feel lack of energy in the morning, lack of excitement, motivation in life. लाइफ में कुछ करने का मन नहीं है अभी. ऐसा भी हो सकता है कुछ करने को बाकी नहीं है अभी. So that is also one kind of illusion because in this world it is abundance of services available for us. In Krishna's creation, there's unlimited services. So our mission is to help you to be happy, to assist you to follow your dreams and transform your life. This course is for all age group, especially for students, because students they are future of our nation. So many students they come and they feel मुझे करना है मुझे एग्जाम क्रैक करना है मुझे करियर में ये ना ग्रोथ हासिल ये माइलस्टोन अचीव करना है आई एम नॉट एबल टू डू इट. This course so we are here to help. Do not worry. So what we are going to discuss today, the first and foremost important thing is why goals are important in life, 7 stages of goal achievement, what is manifestation, we will also discuss that ki manifestation is a myth or a reality, 5 common mistakes in goal settings, what is subconscious mind programming,
And how, with the help of NLP, we can reprogram our subconscious mind to achieve our goals. Yeah. So all these things we are going to discuss further. And if you do not know me, my name is Anupriya, and I am an engineer turned psychologist. So I'm working with Hare Krishna TV since last 4 years. We are trying to help people to come out from their anxiety, depression, any kind of mental health problems and achieve their goal so that they can live a happy, fulfilled life. By Krishna's grace, we are connected from ISKCON since last 15, 20 years. And I'm also wife of a super supportive husband and mother of a lovely son. So our whole family is connected to ISKCON by Krishna's mercy. We also need your blessings so that we can continue this service so that you can live a fulfilled and happy life. We also conduct workshops in Bhakti Vedant Hospital and different corporate industries. I'm also working as a clinical psychologist in Bhakti Vedant Hospital. So वहाँ पे भी थोड़ा हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं. And I also want to express my gratitude to all my gurus and mentors. Most important is our Srila Prabhupada. Because of his mercy, we are here. We all are here on the same platform. We are connected to Hare Krishna TV. And बहुत सारे लोग मुझसे शेयर करते हैं after coming to Krishna consciousness, their life is drastically changed. Yesterday only I was talking to one girl. She told me कि माता जी मैं इस्कॉन में आने के पहले इतना डिप्रेस रहती थी, कुछ करने का मन नहीं करता था. But as soon as I just heard Prabhupada's Kirtan in the temple and saw darshan of the deities, now I started rekindling that spark within me. No, I want to live. And she is just 22 years old. ना तो मेरे अंदर वो इच्छा जागी कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ सेवा करनी है. And yesterday she told, I have got so much now by connecting to Hare Krishna TV and to our ISKCON community, our NLP community. I want to distribute this knowledge to others who are like me, who are doesn't want to even live in this life. They don't have any motive, any goal in life. So we are here to help all our devotees. So Srila Prabhupada, my Guru Maharaj, and apart from our spiritual gurus, I also have learned this science of NLP, psychology, CBT, EFT, Ho'oponopono through different mentors, and they have really helped me a lot. So in this world, how Prabhupada taught us, everything can be utilized in Krishna's service, and that is called Yukta Vairagya. तो जो भी आजकल साइकोलॉजी की मॉडर्न टेक्निक्स डेवलप हुई हैं उनके बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स है. आई ट्राई टू लर्न देम फ्रॉम माय मेंटर्स एंड वी आर trying to convert them into Krishna conscious form and utilize it in service of Prabhupada, Guru Maharaj, and all the devotees. So this is our small attempt to teach this science to all the people who are coming in contact with us. तो ये वर्कशॉप किसके लिए है? इफ यू वांट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड स्टॉप ओवरथिंकिंग, गोल मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप कोर्स इज फॉर यू. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सामने लोगों के सामने बात नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, या इफ यू गो आउट यू फील नर्वस टॉकिंग टू पीपल, this workshop is for you. Now, if you want to resolve relationship conflicts, yeah, you are at the right place, whether it is personal or in professional life. If you are corporate employee, business owner, housewife, student, yeah, everybody should learn the science of mind. How does our brain function? How can we reprogram it? How can we convert it? How can we delete the past programming and create a positive programming which will help us to achieve our goal? Yeah? If you want to have a good mental health, physical health, if you are suffering from any past trauma, you want to get rid of it and want to grow in life, and if you want to master your mind and emotion, this you are at right place. Yeah, because we know there are so many YouTube videos, in one day it is said that कि एक एक दिन में आई थिंक 1 बिलियन आवर कंटेंट, मतलब 1 बिलियन आवर घंटे का जो वीडियोस है यूट्यूब पे वो लोग देखते हैं एक दिन में.
See, so there is nothing lacking in terms of no information. The problem is with the transformation. We are not able to apply that knowledge. But for application of the knowledge, we need some personal guidance, some community support, the personal touch from some mentor. So when it is there, we are able to convert that information into transformation. Now, before coming in contact with my mentor, I was also watching different kinds of YouTube videos. अच्छा ये वर्कआउट करना चाहिए, ये टेक्निक ऐसे साइकोलॉजी में होता है, लेकिन कुछ भी नहीं, एप्लीकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं आता था. But as soon as I have taken shelter of my gurus, I started learning in a very practical, very easy, conducive manner. So that is the purpose. आपको इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिलेगी, बट अगर कुछ चेंज लाना है, देन अवर हरे कृष्णा टीवी कम्युनिटी इज देयर विथ यू. तो सबसे पहले ये बताइए, अच्छा पहले आप बताइए, देन आई विल टेल दी डेफिनेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस नो वर्ड मैनिफेस्टेशन? इससे आप क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है मैनिफेस्टेशन का? चैट बॉक्स में बताइए. ये सही है, बोगस है, ये चीटिंग है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? किसी चीज पर काम करना, ओके मानव. सोनिका जी, विजुअलाइजेशन ऑफ अवर ड्रीम्स, वेरी गुड. फेसिंग द फेलियर्स इन लाइफ, दैट इज मैनिफेस्टेशन. Facing failure is not, yeah, failure is coming, is the product of manifestation, that we can say that. What we think, the universe will fulfill. What we think, we get, yeah, partially true, because we get 70,000 to 80,000 thoughts in a day. Now many thoughts, not that all the thoughts they come into reality. तो हमारे मन में एक दिन में 70,000 से 80,000 तक विचार आते हैं. सभी विचार सही नहीं होते हैं. कौन से विचार सही होते हैं, चलिए बताइए. वेरी गुड क्वेश्चन, है ना? थैंक यू मुस्कान, मुस्कान फॉर रेजिंग दैट पॉइंट. सो सारे विचार जो कुछ हम सोचते हैं वो तो सही नहीं होता. तो क्या सही होता है, क्या रियलिटी में कन्वर्ट होता है? वैष्णवी, वेरी गुड. टू अचीव समथिंग विद अवर माइंड पावर. वेरी. अपने माइंड को नेचर और गोल के हिसाब से रेजोनेट करना, जिससे कि गोल जल्दी मिले. हाँ, ये भी सही है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया? या मैनिफेस्टो में देखकर किया पर अभी तक काम नहीं आया. हाँ, दिस इज द, यस, नहीं आप सही बोल रहे हैं. मैं भी ऐसे ही करती थी, वीडियोस तो बहुत देखती थी, बट होता नहीं था कुछ. until unless, because it is a process, step by step process. Imagining something coming true, we can set one goal and start imagining it coming. Okay, half, you can say that only two steps of manifestation: imagining और setting the goal, भगवान के बारे में सोचना. ओके, यस, करेक्ट मुस्कान. व्हाट वी थिंक रिपीटेडली, जो विचार हम बार बार अपने मन में लेके आते हैं, और उसमें अगर इमोशन का तड़का लग जाए, अगर वो सी एनी थॉट रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, अगर हमारे मन में विचार आ रहा है कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, no, I should not fail in that exam, oh my god, I should not get toxic people in my life, oh my god, I should not get no fight with my boss or my in-laws. अगर ये विचार हमारे मन में बार बार आ रहे हैं, कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, that what, then definitely, how many of you have felt, जो आप सोचते हैं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वही हो जाता है. Type yes in chat box. Whatever thought you are creating, ये ना हो जाए, should not happen, should not happen. It happens for sure. Type yes in chat box. फेल ना हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए, और हो जाता है. Yes, we all have experienced this thing. So let us see why it is happening. How does it work? So you can also take a lot of notes if you, because there are some important points which are now coming up. तो आप ये notes बना सकते हैं. What is manifestation? It is a process of converting the invisible. What is invisible? Your thoughts, your mind, right? Into visible, your desire into reality. यहाँ पे इनविजिबल का मतलब है जो दिखाई नहीं देता. क्या नहीं दिखाई देता? डिजायर.
हमारे अंदर जो इच्छा होती है, जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स कैसे आते हैं हमारे मन में? इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी, डिजायर इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, राइट? व्हाट इज डिजायर? टेल मी, डिजायर क्या है? नथिंग but a thought, correct? So converting that thought into reality is the full process of manifestation. How does it work? In one sentence, if we want to explain, through the alignment of our thoughts, first thoughts, emotions, intentions, and actions. So we'll explain one by one all the steps. पहला है thought, फिर है emotion, intention, and action. अगर ये चारों चीजें अलाइन हो जाती है, it is equals to success. Success in any field of the life, whether it is career, finance, health, relationship, or money, any area of life. You will manifest whatever you desire. That is possible. Krishna has given us unlimited potential. You know that. भगवान ने हमको असीमित क्षमताओं के साथ इस धरती पे भेजा है. आपको पता है, qualitatively we are one with Krishna. We have same quality as Krishna. They are covered over with doubt, the past conditioning, past sanskaras. पहले ऐसे होता था ना, हम सबने सुना है, in past era there were rishi munis and saints na. People they used to go to them, ask for no blessings. मुझे blessings दे दीजिए, आप blessing देंगे तो ये हो जाएगा. People used to go to them, please give me blessings so that I can earn money, my daughter gets married, my son gets a child, and all those things, right? Once they get the blessing, it has to be done, and that is called manifestation. King Dasharath, he was not getting any child, उन्होंने यज्ञ किया, he got that kheer, and this is the process of manifestation, a pure desire, a belief. Now, if the saint, a pure devotee is praying for me, it has to happen. This is a belief, strong thought. Emotion is the positive emotion of faith, hope, excitement. Yes, it will happen. And consistent action. उन्होंने कहा यज्ञ करना है, yeah, he did that yajna, he did all the austerities, and the result is manifestation. Of course, the hidden, point here which is missing is Krishna's mercy. And it is our firm belief Krishna's mercy is always there. It is always in each and every moment with each and every one in this world. Krishna's mercy is always available. भगवान की कृपा हमेशा हम सभी के साथ है. इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि भगवान का दुश्मन हो. कोई है ऐसा? People, Hiranyakashipu, like Ravana, they used to think Vishnu is my enemy, but Vishnu never thought like this. He knows that all Jivatma, they are nothing but देख लो part देख and लो टीवी parcel देख लो थोड़ी देर. of Krishna. Okay, yeah, thank you for being on mute. Yeah. So, what I was saying, Krishna's mercy. This is hidden part, it's always there. So you can mention, you can add one more plus. So where I have written this formula, you can add one more plus Krishna's mercy. It is always already there, so it is like uh, a hidden constant. So that's why there was no need to mention it. What I was built. Yeah, I was saying something. I just, yeah. So whatever is happening in our life or not happening in our life, it is nothing but a manifestation. अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है वो भी मैनिफेस्टेशन है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है वो भी हमारा ही मैनिफेस्टेशन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है, उसने सोचा मुझे मेरा एग्जाम आ रहा है, मुझे तैयारी करनी है, तो दिस इज थॉट, राइट? एक विचार आया, आई वॉन्ट टू स्कोर 90% और 80% इन माई एग्जाम. ठीक है, अभी आप उसके बाद क्या होगा, इस थॉट को पावरफुल बनाने के लिए उसमें इमोशन ऐड करना होगा. नाउ वी हैव टू ऐड वन इमोशन. Yes, I'm hopeful. I'll do it. I can do this. This is called confidence.
ना, एक्साइटमेंट, होपफुली मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी. So when you are giving energy of your emotion to that thought, it will become a powerful intention. Now you have to repeat this intention every day before going to sleep, after waking up. So when you repeat this intention again and again and again, it will become a belief. Once this thought becomes a belief, your body helplessly will take action towards that goal. You cannot stop yourself taking action towards that goal. तो जैसे ही वो एक थॉट आपने उसको इमोशन दिया, पॉजिटिव इमोशन दिया, होपफुल है आप, ग्रेटफुल है, यू आर एक्साइटेड टू अचीव दैट गोल, यू हैव कॉन्फिडेंस, आई कैन डू दिस. When you repeat this thought again and again with emotion, it becomes a belief, right? When belief and intention is there, then automatically body takes action. So you will start studying sincerely. यू विल मेक अ प्लान. इस दिन को मुझे ये पढ़ाई करनी है, ट्यूसडे को मुझे ये पढ़ना है, वेनेसडे को मुझे ये पढ़ना है. और आप एक फोकस आपके अंदर आ जाएगा, एक रेगुलरिटी, डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा, और यू विल स्टार्ट एक्टिंग टुवर्ड्स दैट गोल. मैनी पीपल दे गेट स्टक, है ना, एट फर्स्ट स्टेज आफ्टर यू गेट अ थॉट, बट इमोशन इज आई कैन नॉट डू दिस, मुझसे तो नहीं होगा. हेल्पलेसनेस, सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, मुझसे नहीं होगा, सब लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो, मैं फेल हो गई तो, ना उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, somebody will ना हर्ट मी, दे विल लाफ एट मी. तो इमोशन क्या है? इज इट अ पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन? जैसे ही विचार आया कि मुझे ये करना है, उसके पहले ही डाउट, अरे मैं तो नहीं उठ पाऊंगी, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मेरी बुराई होगी, ना मैं तो पहले भी नहीं किया था, अभी कैसे हो जाएगा. थॉट के बाद नेगेटिव इमोशन, धराशायी, डन. वी ऑलरेडी ना लॉस्ट द बैटल. शुरू होने के पहले ही हम हार गए ना. सो वी हैव टू, दैट्स व्हाई वी नीड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड अ ब्लूप्रिंट, proper guidance, reinforcement. If we are going somewhere wrong, somebody should be there to correct us. Yeah, so this was a brief about manifestation. What about negative things? If I am getting some disease, अगर मुझे एंजाइटी है, या मुझे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अगर मुझे बैक पेन है, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम? टाइप यस इन चैट बॉक्स. Many of us. So our bad health is also nothing but our manifestation. How? It starts with negative thinking. Somewhere we get this thought, I don't want this disease. मुझे बीमार नहीं होना. Is it a positive thought or negative thought? I हरे don't want कृष्णा। anxiety. Yes. Yes, Prabhu. जैसे अभी आपने पूछा कि किसको भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ऐसे में लोग इसलिए, मतलब मैं इसलिए नहीं बोला, या ये सोच के कि मैं बोलूंगा तो नजर लग जाएगी, तो ऐसा ये वही वाली बात हो गई जो आप मुझे समझा रहे हो, हम सबको समझा रहे हो कि मैं बोलूंगा तो मैं क्यों लाइमलाइट में आऊं, चुप नहीं, नहीं है प्रॉब्लम, तो मत ही बोलो, चुप रहो। अगर जिसको है वो यस बोल देगा, ये भी तो एक मैनिफेस्टेशन का हिस्सा है ना, ये नहीं? Yes. Definitely thinking that I have something which others don't have, तो मुझे नजर लग जाएगी, हाँ है ना. तो इसलिए हम शेयर नहीं करना चाहते. आप ये बोल रहे हैं प्रभु जी? जी हाँ, मतलब अभी जैसे आपने बोला किस किस को प्रॉब्लम, एंजाइटी प्रॉब्लम है, मैंने, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने बोला मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो मुझे ऐसा। नजर लग गई. दिस इज ऑल्सो तो ये अ भी तो, दिस काइंड इज ऑफ ऑल्सो। हाँ। manifestation. ये- Hmm? हाँ, वही So पूछ रहा हूँ। somewhere, this is a kind, if we think I don't want to share because if other will start feeling jealous of me, about my good health, so I will lose my good health, right? Yeah, this is a kind of manifestation. अगर आप किसी चीज, if you have some blessing with you and you do not want to share it with others, ना, so see everything is energy, right प्रभु जी? Everyone, अभी हमारे उस पे
Everything is energy. If we have something, if we are energy, if it is not flowing, it is stuck at one place, it will start spoiling. आपने देखा है, जो पानी जो बहता नहीं, एक जगह रुका रहता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, या water clogging and all those places, the insects start taking birth, so many mosquitoes. So if we have some blessing, if we are not sharing with others, ना that blessing will go away बच्चा in है ना, course of ऐसे गेम time. में दिखा दो क्या देना चाहेंगे हाँ फिर जी. क्यों से वो रखना उसका Okay. तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता फिर क्या देंगे कॉफी मग्स वगैरह Yeah. Yeah. So how a disease start, we were talking about it. So when we have no, maybe some anger issue, some of us may be having some anger issue, हमें गुस्सा आता है, some of us having overthinking, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, या फिर इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगी, फिर वो क्या कहेंगे, अगर सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, एवरीथिंग विल बी जस्ट लाइफ इज ओवर, ना ओवर थिंकिंग, ना सो ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, fear, anxiety, worries. If we have such emotions and negative thoughts, when we are manifesting it, आप सोचिए जब जो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट से स्टार्ट हुई है. Unconsciously, we have no repeated negative thoughts and emotion, maybe about ourselves or about people around us. या हम खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली कुछ नेगेटिव थॉट्स है, कुछ नेगेटिव इमोशंस है, मे बी इट मे बी अ वैलिड इमोशन. आई एम नॉट सेइंग कि सारे नेगेटिव इमोशन खराब होते हैं, ऑल इमोशंस आर अलाउड, यू नो. अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको कहीं ना कहीं हर्ट फील हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, या कहीं ना कहीं आपको जेलेसी फील हो रही है, ऑल इमोशंस आर वैलिड. बट थिंग इज दैट दे शुड बी फ्रीली फ्लोइंग. इफ दे गेट स्टक, देन इट इज अ प्रॉब्लम. अगर वही नेगेटिव थॉट इमोशन बार बार रिपीट करते हैं, वी आर मैनिफेस्टिंग डिसीज इन अवर लाइफ. सेम विद द रिलेशनशिप. आप लोग कभी कभी सोचते होंगे ना, क्यों मेरे लाइफ में ही ऐसे खराब खराब लोग आ रहे हैं, क्यों मुझे ही खराब सासू माँ मिली है, क्यों मुझे ही खराब बॉस मिला है, वाई ओनली आई एम अट्रैक्टिंग नो रॉन्ग पीपल इन माई लाइफ. हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन? लेट मी नो इन चैट बॉक्स, टाइप यस. क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा बार बार बुरा हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए, हाउ मेनी सिंस आई हैव कमिटेड इन माय पास्ट लाइफ, व्हाई कृष्णा इज पनिशिंग मी. यस. सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल और लॉ ऑफ कर्मा थ्रू क्वांटम फिजिक्स ऑल्सो. भगवत गीता में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. इफ यू वांट टू सी द साइंटिफिक पार्ट ऑफ भगवत गीता, ना, दिस मास एनर्जी फॉर्मूला, एनर्जी एंड मैटर दे आर इंटरचेंजेबल. एनर्जी और मैटर एक दूसरे में अदला बदली कर सकते हैं, बदल सकते हैं, राइट. E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. हम सभी को ये फॉर्मूला पता है, इट्स वेरी फेमस फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, और इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्मूला. एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस वर्ल्ड, यू नो. सब कुछ, ये मोबाइल, बॉटल, लैपटॉप, मैं, आप, ना, एवरीथिंग, दिस एयर, फैन, एवरीथिंग इज एनर्जी. एंड एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. जैसे भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, सोल नेवर डाइज. आप इसको ना काट सकते हो, ना जला सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते. इट इज इटर्नल. तो जो कुछ भी हो रहा है ना इस दुनिया में, सब कुछ एनर्जी का खेल है. एनर्जी अलग अलग रूप में नाच रही है, या आप बोल सकते हैं ड्रामा कर रही है. Sometimes we get entangled into negative energy loop. Sometimes we are able to shift to positive energy loop. So nothing but you can show a kind of skit is going on. Yeah. So whatever thought is there in my mind, if we give enough energy of emotion, whether it is positive or negative, intention, they convert into action, and slowly desire is converting into reality.
इसको और कैसे समझ सकते हैं? इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैटर। ये उनको दो चाहिए था। ये क्वांटम फिजिक्स बोलती है जब आप किसी चीज को बहुत ध्यान से करते हैं, बहुत पूरा फोकस के साथ करते हैं, एकदम लाइक तो वो डिजायर, फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिजायर टू गेट अ प्रमोशन, वेरी सिंपल। अगर आपके मन में ये भाव आए कि मुझे प्रमोशन चाहिए, दिस इज डिजायर। अभी ये थॉट है, अगर आपने इमोशन के साथ एक एक पॉजिटिविटी के साथ आपने उसको एक्सेप्ट वाली किया, उस थॉट को, यस आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, टिक फिर किया। आपने धीरे धीरे ना उसको इंटेंशन में कन्वर्ट किया, आप सुबह शाम उसके ऊपर ही ध्यान लगाने लगे, इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून, दिस थॉट इज ओनली गोइंग ऑन इन योर हेड, आई वांट प्रमोशन, एनी हाउ आई वांट और प्रमोशन। दूसरा नहीं होता। It converts into intention. Please be on mute. अभी देखते हैं। Distract. हाँ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, प्लीज म्यूट पे रहिए। आपको कुछ बोलना है, प्लीज रेज योर हैंड। या देन आफ्टर दैट, नो, when you are thinking about it constantly, you start acting on it, नो, आप कुछ ऐसे स्किल सीखने लगते हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन देने लगते हैं ना, यू स्टार्ट टेकिंग पार्ट इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज इन योर टीम। Then when you start acting towards it, definitely after 6 months you will get promoted. How many of you have experienced this process? Then type yes in chat box. And whatever discovery had happened so far, ना जिसने कार बनाई, किसी ने फैन बनाया, बल्ब बनाया, थॉमस एडिसन, एक थॉट ही था कि ऐसी चीज बनानी है जिससे सारी दुनिया में उजाला हो जाए। ना इट इज पॉसिबल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। He failed 1000 times, but still he persisted. Persistent action, नहीं करना है, होगा, पता है, होगा होगा होगा, and it became the reality. Right, brothers? When they told we want to make a machine which can fly, everybody was laughing at them. जब उन्होंने बोला कि मैं एक मशीन बनाना चाहते हैं, वो एक मशीन बनाएंगे जिस जो उड़ सके, सब लोग हंसते थे उनके ऊपर। But now you can see the miracle of aerospace science, aeronautical science. जेट एरोप्लेन तो कुछ नहीं, जेट ये मिसाइल्स, पता नहीं क्या क्या बन गया। सो वेन एवर अ थॉट इज कमिंग ना, एंड इट इज द थॉट विच हैज एन इंटेंशन टू सर्व अदर्स, इट शुड नेवर एवर गो इन वेन। अगर आपके अंदर कोई ऐसा विचार आया है जिसमें सब आपकी और दूसरे लोगों की सेवा हो सके, आप ऐसा गोल चाहते हैं जिसमें सबका हित हो सके, भला हो सके, डू नॉट लीव दैट थॉट, होल्ड ऑन टू इट, feed with positive emotions, intention, they will come true. Yeah. चलिए नेक्स्ट है, we will, as I told you, everything is energy in this world, and जहां भी ऊर्जा है, energy has frequency. Frequency. And Dr. David Hawkins has done this wonderful experiment. He has developed a device जिसकी मदद से you can measure your frequency of your emotions. हमारे मन में जो विचार चलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर सकते हैं, and he has done it. The lowest frequency which he could measure was shame, then guilt, then apathy means feeling numb, depressed, ग्रीफ, बहुत दुख को, कई लोग है ना, जैसे शेम को समझते हैं ना, दे आर शेमफुल अबाउट देयर बॉडीली फीचर, व्हाई आई एम सो नो ब्लैक, व्हाई माय नोज इज लाइक दिस, व्हाई माय हेयर्स आर लाइक दिस, आई डोंट लुक गुड, दिस इज कॉल्ड शेम। शेम ना, शर्मिंदा होना खुद के ऊपर। गिल्ट, अगर somehow some mistake has happened and keep on thinking about it, मैंने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, it's okay, it happened, we are not perfect, nobody is perfect, I'm not God, we are not God, it's okay, मैंने we keep on living that guilt throughout our life, very low frequency. numbness, depressed, sadness, मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में, मैं कुछ नहीं कर सकती, low frequency. Grief, maybe somebody passed away, something happened, it's okay, everything is happening for my highest good, everything is perfect in this world. जो भगवान ने संसार बनाया है ना,
आपको लगता है वो उनसे गलती हो गई है कुछ? नहीं ना? हैव दिस फेथ, वॉट एवर इज हैपनिंग, it's happening under divine direction, and it has a positive purpose. What is the positive purpose? He wants you to grow. He wants you and me to grow in life. वो जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका केवल एक ही उद्देश्य है। वो चाहते हैं कॉन्शियसनेस वाइज, वी शुड ग्रो इन लाइफ, वी शुड नो थ्राइव इन लाइफ। इससे सीखिए, आगे बढ़िए, बहुत कुछ पाने को है जीवन में। स्काई इज द लिमिट। And instead of thinking this, this problem is there, I need to learn something, and I need to progress, go ahead in my life. वो सोचने की जगह हम क्या क्या सोचने लगते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, दुनिया खराब है, पीपल आर चीटर, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम यूजलेस सोल, ऑल दोस थिंग्स, आई शुड डाई। लो फ्रीक्वेंसी, the fear, desire, anger, so likewise these are called low frequency emotions. आप में से कितने लोग ऐसे ना लो फ्रीक्वेंसी इमोशन फील करते हैं? एंड लेट मी नो इन चैट बॉक्स, इसमें से कौन सा इमोशन आप सबसे ज्यादा फील करते हैं? विच नेगेटिव इमोशन अमंग ऑल दीज यू आर फीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम? लेट मी नो इन चैट बॉक्स. So why we are discussing this? Always remember, low frequency emotion creates low energy. So in the beginning, many of you have shared you are feeling low energy, lethargic most of the time. This is the reason behind it. Somewhere I'm feeling shameful about myself. Somewhere I'm feeling guilty. I'm sad. A lot of fear, lot of doubt about the process of life. ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? I'm not saying give in, कुछ नहीं करना है आपको, बस आप तमाशा देखो. No, I'm not saying this. Try your best. Take stand for yourself. Work hard. If some goal is there, become like like rock solid person. I will do it. I will achieve it. Krishna's mercy is with me. Hmm. If you have this approach towards life, nothing is impossible. Because I have good intention for everyone, and he will support me. Definitely, he will support me. So when instead of low frequency emotion, if we have high frequency emotion, like love, joy, acceptance, reasoning, we are logically. See, there are two kinds of decision we take in life. One is emotional, other is logical. If we are taking emotional decision in our life, many times we have to face failure. जब इमोशन से ओवर पावर होके कोई डिसीजन लेते हैं जीवन में, 99% टाइम हमको नुकसान उठाना पड़ता है. यस, डू यू एग्री विथ मी? बट व्हेन वी आर लॉजिकल, रीजन है ना, तो वेन एवर सपोज यू हैव टू टेक डिसीजन कि मुझे लाइफ में क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, या एग्जाम इज कमिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक माइंड बोल रहा है गो टू स्लीप, डू नॉट स्टडी, वैसे भी तो फेल ही हो जाएगा. अदर माइंड इज सेइंग नो, जस्ट ट्राई एटलीस्ट वंस, थोड़ा ट्राई तो करते हैं. There are so many people who were in the beginning, they failed many times, still they succeeded. Try करने में क्या है? So emotional mind is saying don't do it, sleep. Right? You cannot do it. Logical mind is saying no, there is possibility. So it is our choice कि हम किसको सुनते हैं. इमोशनल माइंड बोलता है, जैसे अगर आप कोई ना रिश्तों में देखिए ना, जैसे हस्बैंड वाइफ है, इमोशनल माइंड बोलता है कि मेरा हस्बैंड है, स्पाउस तो हमेशा मुझ में कमियां ही निकालता रहता है. ही हैज सो मेनी कंप्लेन, शी हैज सो मेनी कंप्लेन, शी नेवर सपोर्ट्स मी, ही नेवर सपोर्ट्स मी, and they have this problem. Logical mind can see, no, apart from these negativity, they have some positive traits also. So this is the difference. ना, this is the meaning of reason here. यहाँ पे जो लिखा है ना, 5th number पे, reasoning. It has high frequency when we are using our conscious prefrontal cortex properly.
So our decision when they are based on subconscious mind, gone. But when they are based on prefrontal cortex, succeeded. Yeah. So love, joy, peace. Love, joy, peace. High frequency emotion. So when we have high frequency emotion, our electromagnetic field is strong. We are giving strong signal to the universe and we create a coherent field. Our productivity increased and outcome is success. So this is how it works. तो जब हम पॉजिटिव इमोशन में होते हैं तो हम ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जो हमें अपने गोल को पाने में मदद करते हैं। ऐसे इवेंट्स पता चलते हैं जो हमें आगे बढ़ने में हेल्पफुल रहते हैं। तो ये सब कुछ आपने पक्का महसूस किया होगा। When you are positive, you are attracting guidance, help from from the universe, from outside. But when we are sad, we are attracting that people. Why people are always behind me? मुझसे क्यों पूछते तुम क्या कर रही हो? उनको पता है मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, उनको पता है मैं भी मेरा कुछ जॉब अच्छा नहीं चल रहा। Why they are asking me again and again? Why I am getting a toxic boss again and again? मुझे ही क्यों ऐसा बॉस मिलता है? मुझे ही क्यों ऐसे कलीग्स मिलते हैं जो क्रेडिट लेके जाते हैं? ना मुझे ही क्यों ऐसी सासू माँ मिली है? Right? So when we are in low frequency emotion, we are attracting negative incidents from outside world. Okay, so one more quantum physics can prove this phenomena by using Planck equation. E is equals to hf. आप चाहे तो लिख सकते हैं. E is energy, h is a Planck constant, f is frequency. So energy is directly proportional to frequency. जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी हमारी एनर्जी होगी, जैसी हमारी एनर्जी होगी वैसे हमारा मैनिफेस्टेशन होगा। अंडरस्टूड? इसको आप यू कैन राइट इन योर नोटबुक। our energy is depending on our frequency and our goal is depending on our energy. All three are interlinked. So if we are operating from the lack, अगर हमारी ये इमोशंस हैं, fear, doubt, shame, तो क्या होगा? हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। हमारी एनर्जी लो हो जाएगी। जब हमारी एनर्जी लो हो जाएगी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग एक्शन, वी कैन नॉट अचीव अवर गोल। Opposite to this, if you have high frequency of love, gratitude, joy, peace, now our electromagnetic field, our aura, now is expanded. We are creative. We will get creative ideas. कैसे करना है, कैसे करना है? जो लोग पॉजिटिव होते हैं, आप देखते हैं कितने सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं उनको। चलो ये ऐसे नहीं हो रहा ना, लेट अस डू इन दिस वे। ओके, ऐसे नहीं हो रहा ना, लेट अस डू इन दैट वे। So they are very innovative in terms of finding solution. They are very creative. They don't give up. अरे नहीं हो रहा है ना, नहीं होगा, चलो जाओ सो जाते हैं। Let us go to sleep. कौन करे? No. Krishna helps those who helps themselves. So never give up. Hmm? So high coherence, energy is generating. You will get no unlimited ideas, options. अरे ये कर लेते, ये कर लेते हैं. So this world is full of energy, full of different plans, full of different ways to achieve your goal. इतने सारे रास्ते बन सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बंद होगा तो हजार खुलेंगे। Yes? So when we are vibrating on high frequency, so this is our brain waves. ना हमारे brain waves भी अल्फा या डेल्टा पे आ जाते हैं। So I think this very deep concept, it will take another half an hour. So we'll discuss it later. Brain waves and all. So now we'll understand very basic thing of psychology or NLP, body mind connection. हम already discuss कर चुके हैं how our stress, trauma, suppressed emotions now can convert into physical symptoms like fatigue, insomnia, diseases. And this phenomena is called psychosomatic illness. ना साइको मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी। तो जो मन के कारण बॉडी में बीमारियां आती है उसे साइकोसोमेटिक बीमारियां कहते हैं। माइंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। ये रूल आप लिख लीजिए, ये बहुत काम का रूल है। प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। माइंड कैन नॉट
discriminate between reality and imagination. जो सच में हो रहा है, जो हम इमेजिन कर रहे हैं, माइंड को उसका डिफरेंस समझ में नहीं आता. इट इज सेम फॉर आवर माइंड. Mind is so powerful. It has immense healing power. Immense healing power. And it also has immense destructive power. It can रिपीट करना destroy माता your जी. DNA, your genes. Yeah, anybody saying something? हरे कृष्णा माता जी, रिपीट करना. माइंड Mind cannot discriminate between reality and imagination. Mind has immense healing power. It can heal any kind of diseases. And mind also has immense destructive power. It can destruct even our DNA pattern, our genetic structure. Yeah. Okay. So now, excuse me, you can Mind cannot discriminate between reality and imagination. imagine And then second point is mind has immense. healing power. It can heal anything, any disease, and it also has immense destructive power if it is not properly aligned or guided. It can create destruction in our body and in our life. जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है ना कि जो मन है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है और सबसे वर्स्ट एनिमी भी है. Depends how we can utilize it. It's like a tool, like that knife. If knife is given in the hand of surgeon, he will do the surgery and make the patient healed, better, cured. If it is given to a thief, a robber, they will kill someone and steal, plunder their money. तो सबसे पहले जो असर पड़ता है एक्सक्यूज मी, प्लीज बी ऑन म्यूट. आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी. इस एनी पॉइंट इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन एनी पॉइंट, you can go through the recording. Yeah, we'll share recording in the group. So the first organ system which gets affected because of our stress is digestive system. How many of you are feeling your digestion is not good? You are having acidity, bloating, constipation, IBS, type S. Let me know in chat box. Okay. Yeah. So this is signal from our body. Our body never lies. Please remember, हमारी body कभी भी झूठ नहीं बोलती. If we are feeling discomfort, any kind of discomfort, it means something is wrong here. कहाँ? In my mind. I need to correct it. I need to find the solution. I need to act on it. Something is wrong. I need to fix it. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ लोचा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, समझ जाइए. Thank you, Prabhuji, for joining us. Yeah. IBS, weight loss, digestive problem. So we need to work on our mindset. This is the signal given by our body. Now then prefrontal cortex. If you are feeling I am not able to remember things, मुझे याद नहीं रहता, I am not able to focus. It's again because of negative thinking, negative programming, maybe negative programming, negative conditioning coming from the childhood. If immune system is not proper, if I'm falling sick again and again, the reason is coming from the past, from our mindset. देखिए, mindset is the product of your the life's journey. We have accumulated so many kinds of patterns so far. But the good news is that we have power to change those negative patterns in our life. Until unless we change those negative pattern or negative habit or conditioning, release those trauma, repair the past, remove those blockages,
ना, कुछ तो ब्लॉकेजेस है इन टर्म्स ऑफ ना, मैं नहीं कर सकता। जब भी कुछ करने की कोशिश की जा रही है, मुझसे नहीं होगा, व्हाट पीपल विल थिंक, नोबडी लव्स मी, दे डोंट सपोर्ट मी, आई एम अलोन, I need support, but nobody is there. So in terms of these negative thoughts, na, these negative thoughts, they actually disrupt our immune system. Anger damages our liver. अगर हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारा लिवर खराब होता है। If we have so much grief, our heart is getting affected. हम बहुत दुख लेके बैठे हैं, सालों पुराना किसी somebody, maybe you broke up with someone, you had divorce, and maybe someone said something few months ago, few days, few years ago. Still, I remember those incidents. It means I am damaging my heart. So we have to learn to release all these past wounds. We have to learn to heal our past identity. And it will not happen in one day, of course. We need some time. Hmm? So if you are agreed to join us, no, this journey of goal manifestation ahead, you are most welcome. No? So we will also discuss few points further. Then we will introduce, we also have 45 days goal manifestation journey. In that, we will learn step by step process. How can we heal ourselves and how can we manifest good health, have good money in our life. The important part of goal manifestation is money manifestation. How many of you are struggling with your finances? Type yes in chat box. Yeah. So somewhere we have some blockages regarding money. Hmm. So in this course, in this journey, first we will work on our health. हाँ, हाँ, माता जी अभी बाद में शेयर कर सकते हैं क्या? ना, तो फर्स्ट वी विल वर्क ऑन अवर हेल्थ। ना, पहले हम अपनी हेल्थ पे काम करेंगे, एंड देन वी विल वर्क ऑन अवर नो रिलेशनशिप, ना, our we will learn chakra healing, and then we will learn money manifestation. So after we get completely healed, now we will get a nice flow of Lakshmi energy in our life. But for that, we have to become a conductor. Now, instead of becoming a resistor of money energy, we have to learn how to become a conductor, good conductor of money energy. So this journey will start, maybe date is not yet fixed. We will announce in the group. Please stay in touch with us through WhatsApp groups. वो हम अनाउंस करेंगे, तो 45 डेज की वंडरफुल जर्नी होगी, एंड एवरी टाइम व्हेन दीज कोर्सेज आर दे आर गेटिंग रिपीटेड, यू विल गेट द लिंक। सो ऑल द प्रीवियस मेंबर्स, उनको तो ऑटोमेटिक मिलेगी जो ही गोल मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए हैं। या एंड what else, you will also get the recordings. Now if you get miss some session, you miss them out because of some reason, you will get the recording. चलिए, तो we'll discuss for 15 more minutes, then we will end. So what about goal now? हमने अभी काफी डिस्कशन किया ओवर मैनिफेस्टेशन, क्या होता है मैनिफेस्टेशन, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर कैरिंग सो मेनी नेगेटिव पैटर्न, इट टेक्स टाइम. I took around 5 to 6 years to heal myself completely. Still, I cannot say I'm completely healed. Still, this is like ongoing process. But it takes time. That's why we are providing lifetime access. जब भी ये होता, हम एक programs करते रहते, by Krishna's mercy, by all of your mercy. Now we will keep conducting these sessions. Keep joining these sessions. Now reform yourself, reprogram yourself, and keep moving in your life. Keep progressing in your life. By Krishna's mercy, there are so many community members that they got very good result in all the areas of life, whether it is health, that their anxiety got healed completely, they found their life partner, they healed their relationship, past relationships, and they are improving their present relationship. They learn how to handle people, different kinds of people, and they have no, in terms of career, no, there are so many youngsters, they got job in MNCs, yeah, and especially money manifestation, no, it will be definitely help you to progress you in your career. Okay, तो एक दिन में तो नहीं होगा, we need some times, and 45 days are still less. Now we will try our best to share whatever knowledge we have
whatever results we got following those processes, NLP techniques, CBT techniques, money manifestation techniques. We will share all of those things with you. So you are most welcome to join our community and further. तो अभी हम देखते हैं what is goal? What do you feel? No, actually Harvard Business Studies says in this world 86 people they don't make any goal. आप में से कितने लोगों के गोल है? टाइप जी इन चैट बॉक्स. You have some goals in life. Or if you do not have clarity about your goals, you can type N in chat box. I don't have any clarity about. So this study says 86% people they don't know their goals. What is my goal? What I should achieve in my life? So many of them maybe they're because of their past conditioning, they are in comfort zone, they are in self doubt, ना they are in autopilot mode, survival zone कि मुझसे नहीं होगा. That's why they always get scared, fearful ना of achieving those goals. तो 86% people they don't make any goal. उनकी लाइफ चल रही है ऑटो पायलट पे, बस सर्वाइवल चल रहा है चलने दो ना, क्या पड़ी है, सब ठीक तो है. कौन गोल बनाए, कौन टेंशन ले. राइट. 14% people they make goal but not very tangible goal in mind. हाँ चलो I want to do this. वो है middle class people, थोड़ा बहुत अचीव भी कर लेते हैं, बहुत कुछ नहीं भी कर पाते हैं. So here we are talking goals in terms of health, career, no, relationship and money. तो अभी I know that everybody has common goal, that's why we are here serving Krishna. वो हम सबका गोल है. But अभी हम जहाँ पे here we are talking about these four areas of life. Do you have some goal about health? If you are having bad health, so do you have some goal? I want to be healthy, fit. I want to achieve this ideal body weight. I'm overweight. ये गोल हो सकता है. About relationship, if you are having problem in your relationship, no, I want to have fulfilling, happy relationship. And we have harmony between us, spouse or children with parents. तो हम इन goals की बात कर रहे हैं. Okay. Money goal. I want to achieve no salary hike, maybe 1 lakh or 2 lakh within 6 months. तो ये goal हम we will discuss about these goals. Okay. And always remember in the beginning I have told Prabhupada has taught us Yukta Vairagya. Every skill, every goal can be utilized in Krishna's service. If you have good health, you can serve Krishna, right? If you have good relationships, your mind will be peaceful and whole family will serve together. If you have money in your life, you can give donations, charity, right? So always connect things. Everything can be connected to Krishna. Have a broader perspective towards life instead of having conservative thinking. Yeah. So this is my humble suggestion. Thank you. But 3% people who are really rich, famous, affluent, no, you see, even no outside ISKCON or within ISKCON, अगर इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, इतने opulent service चल रही है, it is because of the people, rich people who are giving donation, isn't it? If they will not give donation, will those big, you can say that महल आ सकते हैं क्या, बन सकते हैं? नहीं ना. So be practical about it. You should have, I would suggest everyone, have these goals. No, I want to earn more so that I can serve more Krishna. I can donate so much Lakshmi in Krishna's service. So many poor people, they don't get food. They will be getting Krishna Prasadam. So many poor children, they don't get education. No, if I can donate, if I can help them, they will get nice education. We can open some school where apart from material education, we are also teaching them spiritual education. Yeah, so have these goals in your life. Have these big goals in our life. Then only our society can expand, can grow further. Right? So write down these goals. I have kept there on the table. Yeah, please tell me. This is.
Yeah, so like this. So please write down your goals in the chat box. Let me. So about this study, so people who make their goal, the 3% people who can make their goal. So after 10 years, they found जिन्होंने अपने tangible goals बनाए थे, those people, they are earning 3 to 10 times more wealth, influence, success than rest of them. Rest 86%. Got it. So this is the first step towards success in life. We have to set tangible goals, realistic goal in life. And trust me, nothing is impossible for you. Krishna has given you immense potential, unlimited potential. If you have right intention, nothing is impossible. So why having goals is important, we have already discussed. If you go to a station and आप टिकट काउंटर पे जाते हो and he is asking कहाँ का टिकट चाहिए and you say कहीं का भी दे दो, कहीं का भी दे दो, कौन सी ट्रेन का चाहिए, कुछ भी चलेगा. Where will you reach? Can that person give you any ticket? No, you will not reach anywhere. Now, if you're playing football, the two teams, they are playing football, and in that ground there is no goal post. What will happen? What will happen? Tell me. They're playing throughout the day. India Pakistan का मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच दिन भर खेल रहे खेल रहे खेल. Score board is still 0-0. Nobody is winning, nobody is losing. Nothing is happening. No result. Waste of time, waste of energy, right? So that's why making goal is very, very important in life. चलिए. So अभी आप क्या करेंगे? This is your assignment. Now after the workshop, what you have to do? You have to take a page and think. Sit with yourself with peaceful, calm mind and write your goals. What is my health goal? कैसी health चाहिए मुझे? Because this body is temple of Krishna. We will not take care of this. We cannot serve. We cannot do anything. What is my health goal? What is my career goal? Second point. Applicable for students and grahasthas. All of this. What is my relationship goal? अगर कहीं रिश्तों में प्रॉब्लम हो रही, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम अवेयर. समटाइम्स पीपल अवॉइड थिंग्स. नहीं नहीं, सब ठीक चल रहा है. आई काउंसिल सो मेनी पीपल एवरी डे. आई मीन, एंड जब पहली बार वो मेरे पास आते, आई आस्क देम, हाउ आर यू? गुड. ओके. टुडे ओनली वन कपल केम फॉर काउंसलिंग. मैंने दोनों को पूछा, कैसे हो? सब ठीक है, क्या चल रहा है? बढ़िया है. एनी प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम. So why you are here? Then slowly it took them around 30 minutes just to open up, not to accept that yes, we are facing some problem in our life. Sometimes just we want to become good boy, that good girl, good husband, good wife, and there's so many emotion we suppress within ourselves. So when that girl started talking, she started saying so many things. मेरी मदर इन लॉ ऐसे करती है, हस्बैंड ऐसे करते, but ठीक है ठीक है ठीक है, सो कैसे ही होता है ना. So after, no, she wants to acknowledge that emotion, but before that only she was suppressing it. नहीं, ठीक है, चलता है चलता है. So once if we are acknowledging it, we are aware of it, feel it. Yes, this is wrong. It should not happen. I should take stand for this thing. So instead of taking stand, बोलते कोई बात नहीं. This is how toxicity is increasing in the society, because some people, they are tolerating it unconsciously on the name of good employee, good wife, husband. No, XYZ. These are ना avoidant personality. Problem है, लेकिन कोई problem नहीं है. They have gone through 2-3 surgeries, no, at the age of 30. But पूछेंगे क्या है? नहीं, सब ठीक चल रहा है ना. So this is because their root chakra is weak. They are not grounded. Yeah, we'll learn about chakra healing also later on. कैसा क्यों होता है.
This is happening because of the people pleasing mentality. We want to please everyone in our life. भाई मैं तो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती, सब लोग मुझसे खुश होने चाहिए. But we should understand we are not perfect. We are not Krishna. Even Krishna comes on this earth. He has enemies, isn't it? Whenever he takes avatara, he is killing some or other demon, right? And we feel nobody should get no angry with us. Everybody should be pleased with me. सब लोग मुझसे खुश होने चाहिए. मैं किसी को कोई कंप्लेन करने का मौका ना दूं. बहुत अच्छी मेंटालिटी, बट इट इज नॉट पॉसिबल. यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट ऑल्सो. टू एयर इज ह्यूमन. टू बी इम्परफेक्ट इज ह्यूमन. ये ह्यूमन नेचर है. सो वी हैव टू लर्न टू से नो. आप में से कितने लोग हैं जो नो नहीं बोल पाते? टाइप टाइप यस इन चैट बॉक्स दैट यू कैन नॉट से नो. कुछ लोग बहुत कुछ आके सुना जाते हैं, बट यू आर लाइक यस यस यस. आपको पता है आपसे नहीं होगा. ये जो सामने वाला बोल रहा है वो गलत है. दे हैविंग सम अनड्यू एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, बट स्टिल यू ट्राई टू फिट इन दैट expectation just to please them. Unconsciously, na, this programming was done in the past. तुम अच्छी बहू हो, अच्छी बहू होना चाहिए, तुम बहुत अच्छी लड़की हो. गुड गर्ल्स दे डोंट क्राई. गुड बॉयज, बॉयज दे कैन नॉट क्राई. ओनली बॉयज, लड़का हो के रोते हो. हाउ डेयर यू. दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग वाज डन. यू आर अ गर्ल. You should not, open up your mouth. Tolerate everything. Be submissive. Very good to be submissive, but not on the cost of your self-esteem, right? This is very deep topic. We'll discuss during our course, but understand the relationship goal. What is my relationship goal? कैसा मुझे relationship चाहिए? My financial goal, spiritual goal. So this is your assignment. So अभी थोड़ा सा we will also try to learn what mistakes we are making ना while making our goals. तो पहला जो mistake जो हम करते हैं, if we are making such goals, I don't want to be poor, I don't want to waste time, I don't want any disease, I don't want toxic relation, I don't want to be overweight. So please try to understand universe and subconscious mind. Now, we talk about manifestation energies. They don't understand no, not all those things. Right. So subconscious mind has no picture of no and not. So when I'm saying I don't want to be poor, what image is coming in front of you? Let me know in chat box. जब आप बोलते हो कि मुझे गरीब नहीं होना है, तो क्या पिक्चर आ रही है आपके दिमाग में? मुझे बीमार नहीं होना है या पुअर. बीमार हूँ. तो आप खुद को जब बीमारी की पिक्चर आती है, सो सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड पिक्चर्स, विजुअल्स. उसको नो नॉट तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं. एवरीथिंग इज तथास्तु. जो आपने पिक्चर बना ली वो हो जाएगा. इफ आई टेल यू डोंट थिंक ऑफ अ बनाना, केला नहीं, केले के बारे में मत सोचिए. डोंट थिंक ऑफ अ बनाना. क्या आ रहा है दिमाग में? वेरी गुड विशाल. बनाना. दिस इज हाउ. अंडरस्टैंड. अभी तक हमने क्या क्या बोला है खुद को, वो जो जो हमने बोला वो सब कुछ तथास्तु हुआ है. एंड वी आर वॉन्डरिंग व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी. मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आई होप यू आर गेटिंग सम क्लैरिटी अबाउट दिस. हमने बहुत सारे नो नॉट बोले. ये नहीं, वो नहीं, वही हो गया. चलिए, second thing which we have to take care, have some realistic goals. Sometimes, not all, many people, sometimes they make unrealistic goal. For example, if I make a goal, I want to become Prime Minister of India. Unrealistic, right? So the goal should be in touch with reality. It should not be daydreaming. Extremism नहीं होना चाहिए. And we should have resources to fulfill that goal. If I want to become prime minister, तो it is a step by step process. सबसे पहले मुझे जन सेवक बनना पड़ेगा ना, कुछ पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, समाज सेवा का काम करना पड़ेगा ना, कुछ सालों तक.
ना उसके बाद फिर थोड़ा हो सकता है मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे इस पार्टी में कुछ अच्छा सा एक पोजीशन पोस्ट मिल जाए, ना फिर MLA और वॉट एवर द हायरार्की इज देयर. Slowly due course of years, maybe if I'm consistent, 15, 20, 25, 40 साल बाद हो सकता है ना. So if we are making goals, they should be realistic. Check your resources. Is it possible for me? If my goal is to get a salary hike of 50 lakh in 1 month, is it possible? Let me check. Do I have such skills? क्या मेरे पास इतनी स्किल है कि मैं एक महीने में 50 लाख कमा लूं? नहीं ना. So I have to reduce it, make it realistic. Okay, in 1 month, I can make a goal of earning 50,000. Yes. Do I have resources? Yes, I have that much skill. But yeah, I want to improve. I want to reach first to 1 lakh. तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? कुछ ऐसी स्किल, कुछ ऐसा नॉलेज मुझे ऐड करना होगा, सो दैट दैट नॉलेज, द स्किल कैन मेक मी और वर्थ 1 लाख रुपीज. राइट ना. मेक रियलिस्टिक गोल, नॉट टू स्मॉल, नॉट टू बिग. इतना छोटा भी नहीं बनाना है कि मुझे क्या कमाना है, 5,000 रुपए कमाना है. दैट्स टू स्मॉल. राइट ना. सो और we should make a goal so that we have to stretch a little bit from our capacity. ना थोड़ा सा हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले. द गोल शुड बी लाइक दैट. Okay, so make some realistic goal based on 1 minute. It should not be too difficult. If it is too difficult, mind will say no need to do, go to sleep. अगर आपने गोल बनाया कि कल से मैं 1 घंटे योगा करूंगी, कल उठते साथ ही, कल तो मेरे को पूरा 3 बजे ही उठना है. I want to get up at 3 o'clock and I will finish all my 16 rounds. So as soon as 3 o'clock alarm will ring, you will snooze and go back to sleep. Because mind works on pain and pleasure principle. It runs away from the pain, it wants pleasure. It go towards the pleasure. Hmm? It should not be too difficult. It should not be too small also. Now, if somebody is smoking 50 cigarettes in one day and next day he says, कल से एक भी नहीं, mind बोलेगा छोड़, तेरे से थोड़ी होगा. Maybe next day he is having 60 instead of 50. Yeah. So this is a very important point when we are setting up a goal. So you can make a realistic goal like tomorrow I will do 5 minutes of yoga or 5 minutes of meditation. So what mind will say, हाँ 5 मिनट ठीक है, कर ले. Okay, I am with you. We can make a goal like tomorrow I will read 5 pages of this book. Realistic है ना? Possible है. Okay. Yes, boss. तो ऐसा गोल बनाना है जहां से हमारा माइंड हमको पहले यस बॉस कहे. आफ्टर दैट slowly we will keep on increasing efforts. Third point is not making specific goal. The goal should be very specific. अगर मैंने आपको बोला गोल बनाइए, आप बोलते हैं my goal is to be successful. Is this goal is specific or vague? Let me know. Do you get any picture? ना first point was mind understand the visual pictures. अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे सफल होना है, do you get any action plan? How? Is it time bound? अगर आपका गोल स्पेसिफिक नहीं है तो you might achieve this goal but you will take a lot of time. You will waste so much time in figuring out how to be successful. तो ये अभी जो गोल बनाएंगे उसमें आप हाउ पार्ट भी ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मुझे वेट लॉस करना है, सो आई एम डूइंग योगा 10 minutes daily and my ideal body weight is 50 kg as per my height, right? So this is specific time bound goal. Specific, realistic, time bound goal. I am reading 4 pages of a book daily before going to sleep. Specific है goal. You are getting a picture. Before going to sleep, you are reading a book. Now you are doing yoga. My goal is to follow diet. Now eat my last meal before 7 p.m. I am completely healthy and fit.
कैसी इमेज बन रही है खुद की? हेल्दी एंड फिट। खुद को देख रहे हैं, आई एम ईटिंग वेरी न्यूट्रिशियस फूड बिफोर 7 p.m. So I'm just giving few examples to understand it better. Always remember, my goal should never ever be dependent on others. ऐसा गोल नहीं बनाना है. फॉर एग्जाम्पल हमने गोल बनाया, my goal is to be happy, but when my salary will increase. My goal is to get support of my husband. अब अगर ऐसे गोल बनाएंगे, and my goal is to be happy when my colleague or my neighbor will get transferred to another city. मैं तब खुश होंगी जब मेरे पड़ोसी का ट्रांसफर हो जाएगा. मैं तब खुश होंगी जब मेरे पड़ोसी को कुछ लॉस हो जाएगा ट्रेडिंग में. So these are wrong goals. I will be happy when my no boss will praise me. तभी मैं खुश हो सकती हूँ. So these all goals are wrong goals because they are creating dependency on others. So whenever the goal is motivated through by jealousy, enviousness, they are wrong goals. वो सही गोल नहीं है. तो जब आप गोल बनाए तो इस चीज का ध्यान रखें. We should always have this thinking. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्. So my goal should not depend on others or circumstances. जब वो सपोर्ट करेंगे तो ही मैं पढ़ पाऊंगी. रॉन्ग गोल. I can read 1 hour daily because I am enough. I am part and parcel of Krishna. I can do this. And one more important point, celebrating small wins. हमेशा याद रखिए. आप में से कितने लोग हैं, अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अनकंफर्टेबल लगता है? How many of you are feeling uncomfortable if somebody is praising you? Willpower is nothing but intention. Pragya. Intention is called willpower. When you are setting an intention, it is coming from willpower. अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है. Transfer that credit to Krishna. So we will not become proud. But many people, no, they sabotage so much. Self-sabotage सुना है आपने? बार बार खुद की कमियां देखना. मुझसे ये नहीं होता, मेरे को पढ़ते नहीं आता, मेरे को दूसरों से बात करते नहीं आता, मेरा प्रमोशन नहीं होता, कोई मुझसे खुश नहीं है, सब मुझसे नाराज है, मुझे तो गुस्सा आता है, और मैं तो हमेशा दुखी ही रहती हूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है. तो जब हम सबोटाज करते हैं, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, देन वी गो इनटू डिप्रेशन. दिस इज द मेन कॉज बिहाइंड डिप्रेशन. When people do not appreciate themselves, because we know that nobody is going to do that. Sometimes few people are there, it's a few devotees, they are good, they appreciate you. It's okay. If it is there, it's okay. We welcome it and we transfer it to Krishna. But if we wait for other person to come and praise us, we are living in an illusion. अगर हमें लगता है लोग आके हमारी तारीफ करें तो ये नहीं होने वाला. And our subconscious mind is like a 4-year-old child. It works on operant conditioning. Give rewards. If you give rewards, it will do that work more. If you give punishment of saying things, you are bad, you cannot do anything, it will never ever do that work for you. तो हमेशा खुद को कॉम्प्लीमेंट दें. अप्रिशिएट योर सेल्फ. अगर आप सुबह जल्दी उठ गए, अगर 10 मिनट भी जल्दी उठ गए, pat on the back. Very good, you have done it. If you have helped someone, very good, you have done it by Krishna's mercy. So celebrating self-appreciation is must for us. Now maintain a diary. Rather, I always suggest people, आपके पास एक डायरी होना चाहिए जहाँ पे आप डे टू डे लाइफ की ना जो आपने अच्छे काम किए हैं उन्हें लिखिए. Because at the low phase of your life, this diary will help you immensely. In each and every all of us life, our life, we face some low time, when things they do not go as per your wish. हम सबकी लाइफ में ऐसा, हम सब लोगों की लाइफ में ऐसा समय आता है.
So this diary where we have mentioned by Krishna's mercy I achieved this, ये किया था, it is like no booster. With the help of the self appreciation you can bounce back. You will rekindle your faith in Krishna कि भगवान ने तब भी मदद की थी, अभी भी करेंगे. Got it? I hope it is clear. So now we will stop here. There are so many things yet to share, but because of limitation of time, we have to end here. Of course, NLP, and I think in next week again we will conduct this seminar for at least 3 hours. Today, I have some urgent guests to attend. That's why I have to leave early. Please forgive me for that. And trust me, NLP will help you a lot. If you want to achieve your goals in your life in terms of health, career, money, NLP is amazing tool. Many people, they have got result before. I have personally applied in my life and results are amazing. You know, director of Bhakti Vedanta Hospital, he has invited us to set up a complete NGO connected to the hospital so that we can serve more and more people by teaching NLP, neuro-linguistic programming. So neuro-linguistic programming is used by each and every successful person, consciously or unconsciously. Now, how to reprogram your neurons through by the power of language, meditations, and create success in your life. It is like this, and anybody, yeah, of course, it is a time-taking process because subconscious. We have a lot of neural resistances coming from our childhood programming. तो उसको उस पे काम करने के लिए हमें समय तो चाहिए. So many concepts are there, but due to lack of time